Good afternoon, my dear students. First of all, I welcome you into my YouTube channel and Talukdar Maths. Okay, so I hope you all are doing your studies in a very effective manner and take it very sincerely as a students of science stream. So you have definitely some goal in your life. So to achieve your goal, you have to initiate your strategy for achieving that particular goal. So in the subject maths, I want every student should keep 100% concentration in understanding the subjects, okay, understanding the topic and concept of the particular content, okay. So in the last class, I have discussed about that is linear inequality and solve few problems, and here I have discussed about linear inequations or linear inequality in one variable. Today we are going to discuss about a particular content that is called system of linear inequalities. What is system of linear inequalities and how to solve system of linear inequalities and how it can be represented graphically, okay. That is the purpose of today's discussion, okay. You see here I have written two systems. One system I have written in one variable, another system has written in two variable, okay. So when more than one equations are involved together, you are going to solve these two equations together, okay. Then this is called system of linear equations, okay. See why it is linear, because power of x is only 1, so that's why it is linear. ये linear है क्यों, दोनों का power क्या है, 1 है कि नहीं. और why it is system, because more than one equations, more than one inequations, ठीक है. So this is a system of linear inequation in one variable, and here two variables are involved. So this is a system of linear equations in two variable, okay. Again it is linear क्यों है, power of x is 1, power of y is also 1, ठीक है. So here we are going to, our discussion is this one, okay, the system of linear equations in one variable, ठीक है. और ये टू वेरिएबल वाला एक्चुअली क्या है, सिलेबस से रिड्यूस किया गया है, दैट्स वाई अर्लियर इट वाज आल्सो देयर, अभी ये नहीं है, ये है, तो उसको कैसे सॉल्व करें वो हम आज करेंगे, ठीक है. और इसमें मैंने इनइक्वालिटी दिया गया, ग्रेटर देन इक्वल देन, इसमें स्ट्रिक्टली हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है, ऐसा मिक्सिंग भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है. सो इन दिस वे दीज आर ऑल्सो सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशंस, और इट कैन बी लाइक दिस इज लेस देन, दिस इज ग्रेटर देन, और दिस इज लेस देन. In this way what happen, this type of equations are called what, system of linear inequations, okay. So today we are going to solve few questions related to this system of linear equation. So this is the first question I am going to solve. You see what is the question. Question is 6 less than equal than minus 3 into twice x minus 4 less than what, 12. So there are two inequalities involved here. One inequality is what, you see 6 less than what, 3 into what, twice x minus 4. This is one inequality, and another inequality is what, this to this, minus 3 into twice x plus 4, twice x minus 4 less than what, 12. So these two inequality you are going to actually solve, okay. So this is a system of linear inequalities, okay. Now we are not going to solve these two equations separately. What we will do, here you see, we will do what, our job is here in this middle part we are going to find the value of what, x. So we remove, हम क्या करेंगे, यहाँ में जितनी टर्म, सारी चीज़ टर्म है सबको रिमूव कर लेंगे, और फाइनली इस मिडिल टर्म, मिडिल जो पार्ट है इसमें क्या आना चाहिए, x आना चाहिए, ठीक है. तो व्हाट वी विल डू, वी विल व्हाट, माइनस है तो दोनों साइड में पॉजिटिव बनाना है, ठीक है, पॉजिटिव बनाना है, तो से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, या माइनस 3 से डिवाइड कर लेंगे. जब निगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा. तो 6 बाई माइनस 3 क्या होगा, -2, ग्रेटर देन इक्वल देन ट्वाइस एक्स माइनस 4 ग्रेटर देन व्हाट, 12 बाई माइनस 3 इज व्हाट, इट विल बी व्हाट, -4. समझ में आ रहा है, dividing all the part, this part and this part by what, -3. When you these are the symbol, inequality symbol is there, and when you divide or multiply by a negative number, then what happen,
there is inequality will be reverse. So that's property I have used here. Okay. Now my job is to reduce what? Minus 4. How to reduce minus 4? If I add here plus 4, वहाँ में अगर प्लस 4 ऐड कर ले तो क्या होगा? -4 + 4 इज इक्वल टू व्हाट? 0 हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी. सो व्हेन एवर यू ऐड -4 + 4 यार, यहाँ में अगर +4 ऐड करेंगे तो सब जगह में दिस पार्ट, दैट पार्ट, ये दिस तीनों पार्ट में क्या करना होगा? आप +4 ऐड करना पड़ेगा. -2 + 4 greater than equal than twice x -4 + 4 greater than what? -4 + 4. सो ऐड करने से क्या होगा? आई एम एडिंग ए नंबर ऑन द इनइक्वालिटीज़. तो इस सिस्टम ऑफ ये जो इनइक्वालिटी है, इस इनइक्वालिटी में दोनों साइड में क्या है? आई एम एडिंग व्हाट? 4. सो व्हेन यू ऐड इट देयर विल बी नो चेंज. हम लोगों ने लर्न किया था कि कोई भी नंबर इनइक्वालिटी की दोनों साइड में अगर ऐड करेंगे तो देयर विल बी नो चेंज. -2 + 4 2 greater than equal than twice x greater than equal than what? 0. अभी क्या चाहिए? अभी हमें चाहिए ओनली x. तो x मिलने के लिए क्या है? यू हैव टू डिवाइड बाई 2. इसको क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे. 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको भी डिवाइड करेंगे तो ऑल द टर्म मस्ट बी डिवाइडेड. सो 2/2 greater than equal than twice x by 2 greater than equal than what? 0/2. Since we are dividing all part by what? पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहा है तो इसीलिए क्या होगा? चेंज नहीं होगा. इनइक्वालिटी क्या होगा? चेंज नहीं होगा. आई थिंक इट इज ओनली greater than. ओके. सो व्हिच इम्प्लाइज 1 greater than equal than what? x greater than what? 0. तो उसको थोड़ा रिवर्स करके लिखे तो क्या होगा? 0 less than x less than equal than what? 1. Then what is the solution set? From here you can write x belongs to what? This side open, this side closed, open, closed. So therefore the solution set is what? What is the solution set? Our solution set is this left half open interval, left half open interval, because इस साइड में क्या है? ओपन है. So you can say left half open interval 0 to 1. ठीक है. So this is way you can solve such type of equations. Okay. So what is your main job? Main job that's ये जो टर्म मिडिल वाला टर्म में मैंने हाउ आई रीच एक्स में कैसे पहुंच गए, तो ये जो प्रोसीड्यूर मैंने फॉलो किया है, यू हैव टू फॉलो द प्रोसीड्यूर इन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स सो यू कैन सॉल्व इट. अंडरस्टूड? सो दिस आर दी नॉट वेरी टफ क्वेश्चंस. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आस्क्ड एंड हाउ आई रिड्यूस ऑल द टर्म्स एंड फाइनली आई गेट एक्स. मैंने एक्स कैसे मिल गया है, तो ये जो प्रोसीड्यूर मैंने मेंटेन किया है, ये सारी प्रोसीड्यूर को आप लोगों को फॉलो करना है. ठीक है. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ लेट अस सॉल्व अनदर क्वेश्चन, देन इट विल बी मोर इजियर फॉर यू. सपोज दैट द क्वेश्चन इज -15 less than equal than 3 into x minus 2 divided by 5 less than equal than what? 0. This is the particular inequality you are going to solve. Okay. Now here you see denominator is there. First job is to remove the denominator. How to remove the denominator? You have to multiply it by what? 5. Okay. So if you multiply it by 5 in this particular part, you have to multiply it in all the parts. Okay. तो पॉजिटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहा है तो ये क्या होगा? -75 होगा लेस देन इक्वल देन 3 इंटू x minus 2 एंड इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? 0 ही रहेगा. द नेक्स्ट जॉब विल बी व्हाट? रिड्यूस द नंबर व्हाट? 3. तो 3 को अगर रिमूव करना है तो क्या करेंगे? डिवाइड कर लेंगे. डिवाइड करेंगे पॉजिटिव नंबर से, फिर डिवाइड कर रहा हूँ तो साइन चेंज नहीं होगा. साइन व्हाट? साइन विल नॉट चेंज. ओके. एक्चुअली इट इज़ लेस देन. ओके. इट इज़ लेस देन. सो इफ यू डिवाइड बाई दिस देन इट इज़ व्हाट? -25 लेस देन x minus 2 एंड लेस देन व्हाट? इक्वल देन व्हाट? 0. 0 से डिवाइड करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं. 0 को डिवाइड करें एनी नंबर इट विल बी 0. देन आवर मेन जॉब इज़ व्हाट? रिड्यूस व्हाट? -2. तो ऐड करेंगे -25 + 2 लेस देन x minus 2 + 2 लेस देन इक्वल देन 0 + 2 क्या होगा? 2 होगा. एंड फाइनली इट इज़ -23 लेस देन x लेस देन इक्वल देन व्हाट? 2.
Understood? And therefore not less than equal than, this is what less, I'm sorry, it is less than equal than this. Okay, it's correct. Okay, therefore what is x? X belongs to what? Open interval minus 23 to this side close. Okay, this side is open because there is no equality. इसमें equality नहीं है, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा, ये क्या होगा, आपका solution set होगा. ठीक है, therefore required solution set is क्या होगा, minus 23 2. This is the solution set. Okay, in this way you have to solve such type of equations. Okay, you see this is the question. Here you see solve the inequalities and represent the solution graphically. Okay, so there are two inequations have given, two inequalities, or you can say two inequations. Two inequations have given, and these are called the system of linear inequations. How to solve this system of linear inequations? Okay, first we solve this and then we solve this. After solving these two we will get the common solution. दोनों का क्या है, common solution निकालना होगा. ठीक है, common reason क्या होगा, उसका solution होगा. तो पहला equation solve करें. First equation is what? You can write twice x minus 2 less than what? X plus 5, or you can write twice x minus x less than what? 5 plus 2 is what? 7. Okay, or it can be x is less than what? 7. This is the first part. And in the second part you see, you can write 3x plus 6 greater than what? 2 minus x. From here you can write 4x is greater than what? ये x इधर आएगा, 4x होगा, and 2 minus 6. Okay, and finally 4x is greater than what? Minus 4. Dividing both side by 4 you will get x greater than what? Minus 1. Okay, so these are the two inequalities. Final solution. This is the solution set from this particular equation, and this is the solution set from that particular equation. Now draw the number line. Very important, because you have to represent it in graphically also. This is your number line, suppose minus infinity to plus infinity. Okay, and plot the point. This is minus 1, suppose this is 7, and minus 1 will be somewhere else here, minus 1. Okay, minus 1 will be left of 7. Now x is less than 7. X is less than 7 means what? Strictly inequalities are there, so open ball rahega. This is open. Okay, and x is less than 7 means from this point to up to negative infinity. Okay, negative infinity. Draw this line. Okay, this is what? X less than 7, and x is greater than what? Minus 1. Greater than what? Minus 1 means minus 1 se shuru. Okay, this is again open because what is given here is in strictly inequality is given. Okay, no equality is there. तो 1 minus 1 से शुरू होकर आप तक what? Positive infinity. What is the common part? दोनों का common part देखिए, तो common part will be, okay, from here to here, minus 1 to 7. इसमें open ball है, इसमें भी open ball है, so यहाँ में क्या होगा? Open interval होगा, यहाँ में भी open interval का symbol होगा. From the graph, what is the ultimate solution? Minus 1 less than x less than what? 7. Our solution set will be what? Minus 1 से 7 तक होगा. That is, the solution set is, what will be the solution set? Minus 1 to 7. Okay, in this way you can solve the system of linear inequations. Okay, so this way you graphical representation, you have to give this symbol like that. So okay, this is the open and this is also open. So this is your common reason. Okay, minus 1 to 7. Hope you understand. So see, this is a very interesting question, and this question is from your NCERT textbook, miscellaneous exercise, question number 13. Okay, I have written the questions. This is long question,
question is that how many liters of water will have to be added to 1125 liter of the 45% solution of the acid. Okay, 1125 liter of the 45% solution of the acid, so that resulting mixture will contain more than 25% but less than 30% acid content. This is 1125 a liter of this. Here is a mixing of 45%. इसमें कितना परसेंट है? ओरिजिनली 45% क्या है? एसिड कंटेंट है. कितना और अमाउंट ऑफ वाटर आप ऐड करेंगे 1125 के साथ? 1125 के साथ कितना और वाटर ऐड करेंगे? ऐड करने के बाद जो मिक्सर बनेगी, ये मिक्सर का क्या होगा? एसिड कंटेंट क्या होगा? 25% से ज़्यादा होगा, लेकिन 30% से क्या होगा? कम होगा. आफ्टर एडिंग सम अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ वाटर आप ऐड करने के बाद ये मिक्सर क्या होगा? थोड़ा सा डाइल्यूट होगा. डाइल्यूट होने के बाद उसमें एसिड का कंटेंट क्या होगा? कम होगा. ये जो एसिड कम हो के रेंज क्या होगा? 25% और 30% के बीच में रहेगा. सो सपोज दैट x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड. ओके, हमने कितना लीटर ऐड किया है? वाटर x लीटर ऐड किया है, तो मिक्सर क्या बनेगा? 1125 प्लस x लीटर. ये जो मिक्सर है, ये मिक्सर ये ओरिजिनल वाला 1125 और 45%, ये इसमें कितने परसेंट एसिड है? 45% है ओरिजिनली. अभी क्या होगा? ये जो ओरिजिनली था ये क्या होगा? 25% ऑफ द मिक्सचर, 25% ऑफ 1125 प्लस x. इसमें जो एसिड कंटेंट कितना हो रहा है? 25% हो रहा है मिक्सर में. ये ओरिजिनल से कम होगा, बट इट इज़ लेस देन 30% ऑफ दिस. ओके, ये क्या होगा? 30% से कम होगा. सो दिस मिक्सर क्या होगा? 30% ऑफ 1125 प्लस x. ठीक है. सो अल्टीमेटली जो ओरिजिनली यही था. ठीक है, अंडरस्टूड. ये 25% से ज़्यादा होगा. इट इज़ व्हाट? ग्रेटर देन व्हाट? मोर देन 25% बट लेस देन 30% ऑफ एसिड कंटेंट. ओके, दिस इज गिवन इन योर क्वेश्चन. नाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर इन इक्वेशंस. अंडरस्टूड. Now how to write this particular equation? Can 25% means 25 by 100 into 1125 plus x. So is nothing is there, calculations only. 1125 into 45 by 100 less than what? 30 by 100 into what? 1125 plus x. Okay, this is the question. Now 100 and 100 in everywhere is there. You can cancel it because it is a positive number. How you can cancel? By multiplying by 100. इधर भी 100 मल्टीप्लाई करो, इधर 100 मल्टीप्लाई करो, इधर 100 मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा? कैंसिल हो जाएगी. इट बिकम्स 25 इंटू वाट? 1125 प्लस x लेस देन वाट? 1125 इंटू 45 लेस देन वाट? 30 इंटू 1125 प्लस x. ठीक है. सो फाइनली दिस इज द इनइक्वालिटी. ठीक है. तो दिस इनइक्वालिटी इज ए लिटिल बिट, दैट इज कैलकुलेशंस आर मोर. सो व्हाट विल डू? विल सेपरेट दिस इनइक्वालिटी फर्स्ट एंड द इनइक्वालिटी. दो इनइक्वालिटी में डिवाइड कर लेंगे. फर्स्ट वी सॉल्व दिस पार्ट, ये पार्ट सॉल्व करेंगे, एंड सेकेंड वी सॉल्व दिस पार्ट, ये पार्ट सॉल्व करेंगे, एंड देन फाइंड द x. ओके, यू सी first part is what? 25 into what? 1 multiply कर ले, 1125 plus 25x is less than what? 1125 into what? 45. Okay, from here you can write 25x is less than what? 25 is less than what? It will be 1125. ये 1125 क्या होगा? इफ यू पिक अप दिस टर्म इन द राइट हैंड साइड,
then 1125 will be common and it will be 45 minus 25. I hope you are understanding. Okay, so ये जो टर्म है इस टर्म इस साइड में पिकअप किया है and finally 1125 will be take common. Okay, and from here you can write 25x less than what 1125 into what 45 minus 25 कितना होगा 20. Okay, now dividing both sides by 25, it will be 1125 into 20 divided by what 45. I'm sorry 25, and 25 into 1125 कितना होगा I mean 45 होगा ये. This is will be 45. Okay, finally you can get x is less than what 45 into 20, or finally you can get x is less than what 45 into 20 is what 900. This is 1. This is relation number 1. Okay, now second part we are going to solve. What is the second part? Second part is what 30 into 1125 plus x less than. Okay, second part लिया जाए again. One 1125 into 45 less than what 30 into 1125 plus x. Okay, इसको solve करें. ठीक है, so this is a lengthy question, nothing is there. So what we will do 1125 into 45 less than what 30 into 1125 plus 30x. Okay, if here you see if you pick up this term इसमें ले आइए 1125 कॉमन आएगा into what 45 minus 30 less than what 30x. Okay, and from here you can write 1125 45 कितना है 15 less than what 30x. Okay, and from this relation you can write 30 से डिवाइड करें क्या होगा 1125 into what 15 divided by 30 to cancel and less than what x है 30 से डिवाइड कर दिया है, दोनों साइड में पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है. सो वी हैव नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा. तो अल्टीमेटली क्या होगा, सो इट बिकम्स विच इज इक्वल टू व्हाट कितना होगा 5 and then 6, I think 6. Okay, and this is 2.5. Okay, less than x. This is your relation. Okay, from here you can say x is greater than what 562.5. Am I sure? So you see, calculate, इसको divide करें 2 5 then what 6 then 2 2.5. Yes, okay, so this is the relation number what 2. Now from the relation 1 and 2, from relation 1 में क्या है, this is the relation x is less than 900 and here x is greater than what 562. So from 1 and 2 you can say from 1 and 2 क्या रेंज होगा 5 6, ये लिखने का ज़रूरत नहीं, यू राइट दिस इज़ 1. ओके, दिस इज़ योर 2. ओके, 562.5 लेस देन व्हाट x and x less than what 900. Okay, so amount of water you have to add it, amount of water you have to add it with the particular 1125 liter of 45% of acid. कितना लीटर ऐड करेंगे, मिनिमम कितना लीटर ऐड करेंगे 562.5 एंड मैक्सिमम कितना होगा 900 से थोड़ा कम. दैट मीन विद इन दिस रेंज, दैट मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर यू हैव टू ऐड इट बिटवीन व्हाट दिस टू दिस. ये लास्ट सेंटेंस आप लोग लिख लेना, ठीक है. सो अमाउंट ऑफ वाटर टू बी एडेड विद द मिक्सचर विद द पर्टिकुलर 1125 लीटर ऑफ 45% ऑफ एसिड, उसके साथ ऐड करेंगे
कितना ऐड करेंगे 562.5 और 900 के बीच में कोई भी x हो सकता है, कोई भी ऐड कर ले। तो ऐड करने के बाद क्या होगा, ये जो कंडीशन दिया है क्वेश्चन में, ये कंडीशन क्या होगा, फुलफिल हो जाएगी। अंडरस्टूड? सो दिस इज द क्वेश्चन, एक्चुअली नथिंग इन दिस क्वेश्चन, सम बिग कैलकुलेशंस आर देयर एंड here again we have used what, that is system of linear inequations, system of linear inequations. Okay, there are more problems in your textbook. I am not going to solve every question, so you try and you have to finish it. I hope I have touched all the part of the particular chapter and in all contents से मैंने कुछ problems कराया है, such that you can get an idea. Now it is your turn to solve all other questions in the text and beyond the text जाके आप भी कुछ problem solve कर सकते हैं. I will give one class on this particular topic. It is not related to your NCERT textbook, but you have to know it. Otherwise in coming days you get difficulties, because मैंने आप लोगों को वेवी कर्व मेथड पढ़ाया था. सो वो वेवी कर्व मेथड से इन इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते कुछ प्रॉब्लम्स कराए थे. लेकिन आज एक स्पेशल नेक्स्ट क्लास में एक स्पेशल इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा 2-4 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से सॉल्व करेंगे. ठीक है, और होप दैट आई विल फिनिश द पर्टिकुलर चैप्टर विद इन नेक्स्ट क्लास. ओके, so thank you very much, all the best, have a good day ahead, bye bye. Okay.